अच्छा जी, हमने कल क्वाड्रेटिक्स टॉपिक में we have done the first three things. I mean, the first one is quadratic inequality. After quadratic inequalities, we did discriminant, and after discriminant, the third thing, simultaneous linear and non-linear equations. हमने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और उन साइमल्टेनियस लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन में भी जो अप्लाई होता है discriminant wala case, we did that as well. Okay, now the next thing is equations reducible to quadratics. Equations reducible to quadratics. We know how to solve a quadratic equation, but and also the linear equation we did in O level. But अगर quadratics के अलावा कोई और equation आ जाए power 4, power 6, quart equation, power 6 वाली equation या कोई और different equation, तो उसका हमें solve करना शायद नहीं आता. But we can reduce those non-quadratic equation to quadratic by making some substitution. Like how? Let's see. Suppose the question is solve x4 minus 8x square minus 9 is equal to 0. Suppose we have to solve this equation. ये जो specific question है, इसको अगर देखा जाए तो ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है. But is this quadratic? No, it's not quadratic. This is power degree 4 equation. Highest power is 4, so mean degree 4 equation. This is called quartic equation. We want to change, convert, reduce this equation to quadratic by making some substitution. So ऐसी क्या substitution बनाई जाए कि it becomes a quadratic? Yes, this, if you see, this is x square and this is x4. Usually you will see these two terms, in those two terms में से किसी एक का square लेंगे तो you'll get the other term. Like if you see, if we take the square of x square, what's the square of x square? Double power gets multiplication, so 2 times 2 will make it 4. So here one, variable x square and other x4, one of them is the square of the other. So इसमें आपने substitution क्या करनी है? जो small variable होगा, like x square, उसको आप let कीजिए t. Let x square is equal to t. Now tell me, if x square is equal to t, then what is x4? X4 will be t square. So our original equation, after making this substitution, will become t square minus 8t minus 9 is equal to 0. Ali share Ali, ये कौन सी equation है? Jan share, sorry. Is this quadratic? ये आपके पास quadratic equation. क्या आपको quadratic equation solve करनी आती है? Yes. So this is a quadratic equation. अब हम इस quadratic equation को solve कर सकते हैं. So आप solve कीजिए either by factorization. अगर आपको factorization से करना आता है, factorization से करें. Quadratic formula से करना आता है, करें इसको solve. Because now this is a quadratic equation and we know very well how to solve a quadratic equation. Midterm break. Product should be 9 and difference should be 8. Midterm break possible है? Yes, 9 and 1. So minus 9t
plus t. So common by grouping. Common from first two is t minus 9. Common from last two is nothing mean 1. T minus 9 is equal to 0. So we got t minus 9, t plus 1 is equal to 0. So either t minus 9 is equal to 0 or t plus 1 is equal to 0. So the values of t are 9 and minus 1. जी इब्राहिम, सर ये सेकंड स्टेप के बाद वर्किंग शो करना ज़रूरी होता है कि सिर्फ हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 1 मार्क होगा। अब वो सॉल्व अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज प्लग करने वाला स्टेप होना चाहिए, और अगर फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन का कोई एक स्टेप एटलीस्ट शो होना चाहिए। मेरी जो सर से मैं 3 लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक स्टेप भी अगर आप कर देंगे तो काफी होगा। वो आपका ये शो हो रहा होगा कि आपने वर्किंग की है। और कैलकुलेटर से आप कर रहे हैं तो फिर कैलकुलेटर से स्टेप आपके शो नहीं हो रहे होते, उसको आपको करना होता है। आप अगर अपनी पास पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे जहां जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन के मिडल में 60% चांसेस हैं कि उसने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मार्क असाइन किया हुआ है। 60% चांसेस, 40% चांसेस हैं कि वो मेथड मार्क असाइन नहीं किया, डायरेक्ट आंसर मार्क है। अब उन 40% में अगर आपने वर्किंग नहीं शो की, डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो वो तो चलेगा। लेकिन वो 60% जिसमें मेथड मार्क के मार्क्स होंगे उसमें आपको मेथड मार्क अगर नहीं मिला तो आंसर मार्क भी नहीं मिलेगा। विनोद, ऐसे ही है ना कि अगर मेथड मार्क ना मिले आंसर मार्क नहीं मिल सकता, तो वो 2 मार्क्स वहां लूज होंगे। और आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको तो नहीं पता कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसी है, तो आपको स्टेप्स शो करने चाहिए। ओके इलियास, t इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। फाइनल आंसर आ गया या कुछ करना है अभी? क्वेश्चन क्या था, इसको सॉल्व करें। इसमें क्या वेरिएबल था? x। जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहता है उसमें जो वेरिएबल होता है वो फाइंड करना होता है। सो x तो अभी तक हमने फाइंड ही नहीं किया। सो जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी इलियास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, उस सब्स्टिट्यूशन को रिवर्स करें आप। रिवर्स मीन t की जगह अब आप लिखते हैं वी नो t इज एक्स स्क्वायर, सो इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। So then what is x? So x is plus minus 3, और यहां से x is square root of negative number does not exist, mean at least real answer नहीं है। So this equation has two real solutions, plus 3 and minus 3. So equations reducible to quadratics mean कि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बट आप उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन करके वी कैन मेक इट क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करके एंड पे दोबारा सब्स्टिट्यूशन रिवर्स करके वी कैन फाइंड एक्स। ओके, मोर क्वेश्चंस। If we have solve x6
plus 26 x cube minus 27 is equal to 0. जी क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए यहाँ पे? Let x cube is equal to t. So Abdullah, if x cube is equal to t, then what is x6? If I say x cube is t, then what will be x6? T square. Because if you take the square on both sides, so x cube square mean double power will get multiplication, so x power 6 will be t square. So we have made the substitution x cube is equal to t. Now use this substitution. You will get t square plus 26t minus 27 is equal to 0. So by making this substitution, we have made a quadratic equation. Now solve this quadratic equation. Done? क्या आंसर? क्यूब रूट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्यूब रूट? स्क्वायर रूट सिर्फ नहीं होता, क्यूब रूट होता है। आप कैलकुलेटर है पास? स्क्वायर रूट ऑफ -1 एरर देगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ -1 एरर नहीं देता। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, we will get two values. What are those two values of t? Values of t 1 and minus 27. By solving this quadratic equation, we got 1 and minus 27. But this is not the final answer. We know reverse करनी है substitution. T is 1 mean x cube is equal to 1. T is minus 27 mean x cube is equal to minus 27. If x cube is 1, then what is x? We will take cube root on both sides. What's the cube root of 1? Cube root of 1 is 1. And what's the cube root of minus 27? Minus 3. Remember, square root of negative number does not exist, but cube root exists karta hai. So cube root of minus 27 is minus 3. Got it? नहीं, वो सिर्फ स्क्वायर रूट में होता है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपने वो कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, आपने उसका सिर्फ मुझे फर्स्ट स्टेप बताना है। फर्स्ट स्टेप मीन आपने ये बताना कि सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है। Mean the question is, suppose 2x raised to power 4 minus 3x square minus 11 is equal to 0. जी यस समरा, सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, क्या लेट करना है इस क्वेश्चन में? Let x square be t. So next equation will become
2t² minus 3t minus 11 is equal to 0. क्लियर है भाई? आगे आगे मैं नहीं कर रहा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप नया है आपके लिए, वही हम कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, अगर हो आपके पास 3x minus 5 under root x minus 2 is equal to 0, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है बताइए? अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या अंडर रूट एक्स अगर टी हो तो व्हाट विल बी एक्स? टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स अगर हम इसमें लेट कर लें, आपकी यहाँ पे पावर क्या है? एक्स पावर 1, और ये एक्स पावर क्या है? 1/2, 0.5। सो एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर लें तो आपके पास 2 बनता है, 1 बनता है। सो बिल्कुल जो स्मॉल पावर है हम अंडर रूट एक्स को लेट करेंगे टी। अगर अंडर रूट एक्स टी है, सो जस्ट ये एक स्टेप लिखने की जरूरत, इसका अगर आप स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स एंड स्क्वायर ऑफ टी इज टी स्क्वायर। सो मीन अगर अंडर रूट एक्स आपने टी लेट किया है तो एक्स विल बी टी स्क्वायर। सो योर इक्वेशन विल बिकम 3t square minus 5t minus 2 is equal to 0। ठीक हो गया? और कुछ एग्जांपल? x power 1/3 minus 5x power 2/3 is equal to 7। आगे आई डोंट नो कि सॉल्व होता भी है कि नहीं, बट मैं जो मेन चीज है सिर्फ उसके ऊपर आर्बिट्रेरी रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो बेसिकली माय फोकस इज कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन करने वाला, वो आपको पहले समझ आ जाए। यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए? पावर इन दोनों में से 1/3 और 2/3 में से कौन सी स्मॉल है? 1/3। सो अगर हम x पावर 1/3 को लेट कर लें t, देन व्हाट इज x पावर 2/3? क्या x पावर 1/3 का स्क्वायर लेने से x पावर 2/3 आता है? यस, आता है या नहीं? चेक करते हैं। x पावर 1/3 इज इक्वल टू टी, इसका स्क्वायर लें, इधर स्क्वायर लें। व्हाट्स द आंसर ऑफ x पावर 1/3 होल स्क्वायर? डबल पावर इंडिसेस के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि दे गेट मल्टीप्लिकेशन। सो अगर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट x पावर 2/3। सो इट इज राइट। सो अगर x पावर 1/3 t है, so x पावर 2/3 will be t square। So this equation will become t minus 5t square is equal to 7। ऐसे ही है भाई। इस पे एंड पे क्या करना पड़ेगा? मतलब एंड का मैं पूछूं, जरा सुनिए इधर। सपोज आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ t इज 2 एंड t इज -3। ये मैं लेट कर रहा हूं, आई डोंट नो कि क्या सॉल्व करने के बाद सॉल्व भी होगी या नहीं। बट अगर t ये आ गया, हाउ विल यू फाइंड x? रिवर्स करनी है ना सब्स्टिट्यूशन। सो अब आप t की जगह क्या लिखेंगे? व्हाट इज t? t इज x पावर 1/3। सो t को रिप्लेस कीजिए विद x पावर 1/3। सो x पावर 1/3 is equal to 2, x पावर 1/3 is equal to -3। सो इलियास, अगर x पावर 1/3 is equal to 2 हो, then how will you find x? अगर x पावर 1/3 हो 2, यहां से x कैसे आएगा? मैं क्लियर करता हूं। x पावर 1/3 is equal to 2,
how to find x here from this. देखो 1/3 कैंसिल करना है ना हमने, पावर 1/3 कैंसिल करके x लाना है। सो पावर 1/3 कैसे कैंसिल होगी, आप इधर भी क्या ले लें, क्यूब ले लें और दोनों तरफ क्यूब ले लें। सो क्यूब लेने से क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 क्यूब विच इज 8. So if you take cube of both side, you will get x is equal to 2 cube is 8. And what will be the answer here? यहाँ पे भी अगर आप क्यूब ले लें तो x will be -3 क्यूब is -27. सो आप यूं भी याद रखें, देखें स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करना हो तो वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यूब को कैंसिल करना हो तो क्यूब रूट लेते हैं, और क्यूब रूट को कैंसिल करना हो तो क्यूब लेते हैं। ये 1/3 क्यूब रूट होता है ना, ये बात पता है ना हमें। पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है, पावर 1/3 क्यूब रूट होता है, पावर 1/4 फोर्थ रूट होता है, पावर 1/5 फिफ्थ रूट होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कोई डिफरेंट। √x minus 3 over √x is equal to maybe 5. The initial step is important. इसको क्या करेंगे? Is this quadratic? No, power 1/2 वाली है। x √x means power 1/2। सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए समरा? क्या विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसको? ट्राई कर सकते हैं हम, विदाउट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करें इसको, विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप पेपर में ट्राई करें अगर। सो एलसीएम इज, व्हाट्स द एलसीएम? √x. So ये √x will get multiplication with that √x. √x times √x is g. √x multiplied by √x is, what's the answer? X. √x square, square or square root cancel. So x minus 3 is equal to 5. So √x को उस तरफ multiply कर दिए, we get x minus 3 is equal to 5 √x. So x minus 5 √x minus 3 is equal to 0. अब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यस, क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए यहाँ पे? लेट √x is equal to t, then what will be x? t square. लेकिन ये करने के बाद आपको पता चला, लेकिन क्या हम डायरेक्ट भी इसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे? हम डायरेक्ट भी इसकी कर सकते थे। मीन इसको आप स्टार्ट में यूं कर लेते, let √x is equal to t. So if you let √x is equal to t, you will get, in that case we will get t minus 3 over t is equal to 5. Now it's quite easy to solve this equation. Mean LCM is t, make the denominator common, so t square minus 3 is equal to 5. T square minus 3 is equal to 5t. So t square minus 5t minus 3 is equal to 0. So ये अब आगे solve हो सकता है। Another question, अभी इसको भी stop कर देते हैं। Two x plus 1 whole square minus 3 over 2x plus 1 whole square is equal to 5. Make a suitable substitution to solve this equation. So I want, what is that suitable substitution here? Rida. Yes, अगर हम let कर लें 2x plus 1 whole square is equal to t, then what will you get? We will get t minus 3 over t is equal to 5.
which is a quite simplified form. अब इसको सॉल्व करना इजी होगा, मीन टी फाइंड कर लेंगे, जब टी आएगा तो फिर एंड पे रिवर्स करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। जी ये सब्स्टिट्यूशन करना समझ आ गया। अब आगे मैं फर्दर कुछ क्वेश्चन अब कंप्लीट करते हैं। ओके सॉल्व 3 minus 2x is equal to 4 minus 3 under root x. 3 minus 2x is equal to 4 minus 3 under root x. So what should be the substitution? Direct पहले आप simplify करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, but if you want to make a substitution here in this step, what should be the substitution? Abdullah, let what? Here one variable is x, like this one is x, and the other variable is under root x, mean x power 1 by 2. Which one is small? Under root x. So you should make the substitution of that, mean let under root x is equal to t. So it means this under root x will be replaced with t. Now tell me, how will you replace this x? If under root x is t, then what is x? If under root x is t, then what is x? T square, because the square of under root x is x. So we will get the equation 3 minus 2 t square is equal to 4 minus 3t. So the equation we got is 2t square on the other side minus 3t, 4 minus 3 is 1. So we got this equation. Complete इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So we got 2t square minus 3t plus 1 is equal to 0, which is a quadratic equation. So इस quadratic equation को सॉल्व करने से बताइए what are the two values of t? 1 and 0.25 mean 1 and 1 by 4. So after solving, you are saying that t is 1 and t is 1 by 4. यही है सबका? नहीं अभी t पूछा है ना. So 1 by 2. So the values of t is 1 and 1 by 2. So what is t? T was under root x. So it means under root x is equal to 1. Under root x is equal to 1 by 2. So if under root x is 1, Ilyas, under root x अगर 1 है, how will you find x? यहाँ से x कैसे find करें? स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, अंडर रूट है, अंडर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेंगे. So if you take square on both sides, so what's the square of 1? It is 1. So x is equal to 1.
So under root x square is equal to 1 by 2 square. We will get x is equal to 1 by 4. So x is 1 and x is 1 by 4. जी क्लियर है ये? कल हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस की थी. साइमल्टेनियस एक लीनियर होती थी, दूसरी नॉन लीनियर. वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा एक लीनियर हो, दोनों नॉन लीनियर भी हो सकती है. सो कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं. वी डिड दिस यस्टरडे. सो द क्वेश्चन इज solve simultaneously. The equation is y plus 1 is equal to x power 2 by 3, and the other equation is y is equal to x power 1 by 3 plus 1. So both are non-linear equations. जी इब्राहिम, बताइए कैसे करेंगे इसको? सर हम दूसरी इक्वेशन की जो वैल्यू है x पावर 1/3 प्लस 1 उसको फर्स्ट इक्वेशन की y में पुट कर देंगे. परफेक्ट. सो हम किसी एक इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरे में प्लग करें. ऑलरेडी यहाँ पे y सब्जेक्ट बना हुआ है, जस्ट आप इधर पुट करें. सो जिस तरह हमने साइमल्टेनियस कल हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था कि किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते थे, यहाँ पे y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, इसको बस आप उधर पुट कर दीजिए और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करें. So if you put y over there, so it is x power 1 by 3 plus 1 is equal to x power 2 by 3. So we will get x power 1 by 3 plus 2 is equal to x power 2 by 3. क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? सो इसमें आप क्या इन्वॉल्व हो गए? कल जो हमने टॉपिक किया साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें मैं आज वाला करंट टॉपिक इन्वॉल्व कर दिया है. मींस इक्वेशन को वी कांट सॉल्व विदाउट सब्स्टिट्यूशन, so we should make a substitution here to solve this specific equation. So what substitution should be made? Let Rida, what substitution should be made? Yes, we will make the substitution. Let x power 1 by 3 is equal to t. Then what will you get? हमारे पास इजलाल क्या बनेगा? Yes, so x power 1 by 3 में तो t लिख दिया, t plus 2 is equal to t square. So अगर x power 1 by 3 t है तो x power 2 by 3 is t square. So we got an equation t square minus t minus 2 is equal to 0. We will solve this quadratic equation either by factorization or by quadratic formula. We will get two values of t. What are those two values of t? 2 and minus 1. So t is 2, t is minus 1. Next step, Samra, after having t. Yes, reverse the substitution. X power 1 by 3 is equal to 2. So x raised to power 1 by 3 is equal to 2. X raised to power 1 by 3 is equal to minus 1.
Jancher, x power 1 by 3 is equal to 2. How will you find x? By taking cube on both sides. क्योंकि 1 by 3 cancel करना है तो हमें cube लेना पड़ेगा. So take cube on both sides. So if you take cube on the left side, 1 by 3 and power 3 will be cancelled out. So x आ जाएगा. And 2 cube is 8. And if you take cube on this on both sides, so x power 1 will be minus 1 cube is minus 1. Is that the end of the question? No. Complete तो नहीं हुआ. क्वेश्चन था सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. इसमें टू अननोन थे x एंड y. अभी तो सिर्फ x आया है. नाउ वी हैव टू फाइंड y एज वेल. किस इक्वेशन से फाइंड इस इक्वेशन से y फाइंड करें. सो यूज y इज इक्वल टू, अच्छा एक और जरा बात, 1/3 + 1. जरा एक मिनट देखिएगा. यहां से y कैसे फाइंड करें. आप x की वैल्यू क्या पुट करें. एक ऑप्शन ये कि आप x में 8 पुट कर दें, आ जाएगा 8 पावर 1/3. कैलकुलेटर से करेंगे 2 + 1. द अदर वे इज कि इधर से 8 आया कहां से था, x पावर 1/3 वाज. सो कंप्लीट x पावर 1/3 को आप 2 इधर लिख दें एज 2. सो x पावर 1/3 को 2 लिखें. अगर x की वैल्यू 8 लिखना चाहते हैं दैट इज आल्सो फाइन, कर सकते हैं. वो कैलकुलेटर से करेंगे 8 पावर 1/3 तो वो भी 2 बन जाएगा. So x power 1/3 is 2, mean we will get y is equal to 2 + 1. So y is 3. और उधर से भी अगर हम इसी तरह सॉल्व करें, y is equal to x power 1/3 + 1. So what is x power 1/3? It's -1 + 1. Answer is 0. So x8 y3, x -1 y0. So how will you write the answer? The answer will be written in the form of coordinates. Mean x is 8, y is 3, x is 8, y is 3, x is -1, y is 0. So these are the coordinates. Samra, what do these answers, these coordinates represent on graph? Both were curves, but कौन सी values? Sorry, जहां पे intersect कर रही हैं. So these final answers are basically the points of intersections of these two curves. We know that whenever we solve any two equations simultaneously, we get their points of intersection. So it means these two curves intersect at 2 points, and the coordinates of those 2 points are 8, 3, -1, 0. जी क्लियर है. सो ये हमारा वो टॉपिक भी हो गया जिसमें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. सो अभी मैं वर्कशीट सेंड करूंगा, प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा. ग्रुप में है ना सब. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.